क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है। What happened? Why you scary that things? Or to get upset, I was like, कहा रही है भैया समझ में नहीं आ रहा. And the other guy started laughing. I try to support as much as I can, but I think that means I don't do everything. Yeah. नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं इक्वलेस. आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे फ्रेंड आदरणीय अमित गुप्ता जी, और ये एडटेक इंडस्ट्री में है. ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, अ सेल्फ मेड मैन. सो कैसे हैं आप? Thank you so much. I'm all good, and thank you so much invite करने के लिए. It's my pleasure to be here. अच्छा अच्छा, तो प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर चाइल्डहुड. So मतलब चाइल्डहुड कुछ ऐसा खास नहीं रहा, जैसे सब पे रहता है. तो एक हरदोई जैसे छोटे शहर से हम आते हैं. अच्छा. और वहाँ से 10th तक की पढ़ाई करी. फिर उसके बाद व्हाट वाज योर परसेंटेज इन क्लास 10? सबसे बड़ा सवाल हमारे देश का. I think you ask at the right time. क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई टेल टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ, कि आपके परसेंटेज जो है वो आपका करियर और आपकी लाइफ नहीं डिफाइन करता है. तो आप समझिए कि 10th में मेरे थे 67%, और फिर 12th में थोड़ी सी मेहनत करी तो वो रह गए 59.6%. तो बहुत लोग कहते थे कि क्या होगा, कैसे होगा. एंड देन ट्रस्ट मी, लाइक हम भी कई बार बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होगे क्या बनोगे, और उससे में कोई आइडिया नहीं था क्या बनेंगे. मुझे लगता था कि लाइक द ओनली गोल आई हैड, मुझे लगता था कि कहीं 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी लग जाए और एक मोटरसाइकिल मिल जाए तो लग रहा है कि लाइफ सेट है. सो and that's the reason. In fact, अभी मैंने एक LinkedIn पे भी I was just posting, and I was very sad to see this कि बच्चे जो है वो कुछ स्कोर नहीं कर पा रहे थे, और उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया. या कई जगह से पूरे ऑल ओवर इंडिया से न्यूज़ आई CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद कि कैसे उन छोटे छोटे बच्चों ने सुसाइड किया. एंड आप समझिए सोसाइटी का प्रेशर है जिसको लोगों ने बिल्ड कर दिया है, एंड उसको लगता है कि इफ़ समबडी इज़ नॉट एबल टू स्कोर वेल or life, this is the end of the life, but this is just the beginning of the life. And I always tell to the parents, to the society as well, कि आप एक number से कुछ नहीं define कर सकते. I've seen lot many people have scored like they were on the top throughout their life, but they were still struggling. I've seen lot many people who flung 2 times, 3 times. There were a lack of resources and they have done well. So I believe these numbers, these scores, these marks are just kind of a milestones, but they are not gonna decide like who you gonna be in your life, in your career. I got 63% in class 10th, and as you said, I really worked hard for class 12th, and I scored 44.94% in class 12th. So we match the story. On the same topic, when people decide to end their life, okay, because they got some bad score, how, despite of lot of movies like Three Idiots came, a lot of movies are there, a lot of people are talking about it, despite of that we are still hearing these stories of people committing suicide because they scored badly in or they failed. One more thing, what I have personally observed is that whenever you see a popular guy in class 10th or a popular guy who's scoring well and this and that, most of the chances are that he will not be as successful as the guy who is scoring less. What do you think about that? So I think that is, as I said, like the marks are not the deciding factor. You will find a lot of people who have done well in academics, they do well as well. You will find people who have not done well in academics, they're also doing well. So I'm saying, like, see, it's good to score well, it's good to be in academics, put your best foot forward. But even if you're not able to make it, that is not the end of the world. So for example, like I spend a lot of my time studying, I think history and geography and civics, and I was not able to manage it. So I think I scored very less marks in those subjects because I was not a history guy. And it's as simple as that. If you judge a fish by ability to climb a tree, and that fish will always be very disappointed. So it's very important that we find the right avenues. ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स में अच्छा करो, ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस में अच्छा करो, आप आर्ट में अच्छे हो सकते हो, आप बिजनेस में अच्छे हो सकते हो. तो आपने जैसे बात करी कि 3 इडियट्स मूवी देखी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट आप देखिए क्या माहौल है घर में, क्या माहौल है सोसाइटी में. आप मूवी देख के आए, आपके साथ वो हैंगओवर रहा, वो 5 दिन चला, 4 दिन चला,
बट दिस इज़ काइंड ऑफ अ कंटिन्यूस सपोर्ट दैट वी नीड फ्रॉम अ सोसाइटी. आप देखिए ना, मैंने अभी जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मार्क्स की वैल्यू नहीं होती, बट अगर आप लिंक्डइन पे जाइए, आप सारे स्कूल्स ने, प्रिंसिपल्स ने बहुत हाईलाइट करके डाला हुआ है कि मेरे इस बच्चे ने 99 पॉइंट स्कोर किया है, 98 पॉइंट ये स्कोर किया है. आप मुझे एक पोस्ट दिखाइए जिस पे किसी ने लिखा हो कि इस बच्चे ने 45% स्कोर किया है, बट ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब एंड ही इज़ अ ग्रेट इन एकेडमिक्स. तो आपको प्रेशर, एंड दिस प्रेशर इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. आप समझिए स्कूल का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, उसके बाद आपकी सोसाइटी का प्रेशर, घर का प्रेशर. हमें ये सारी चीज़ें एक इकोसिस्टम बनाना होगा जहाँ पर बच्चे रिलैक्स कर सकें, जहाँ पर अगर बच्चे फेल भी हो रहे हैं तो उस पर भी उनको कुछ नहीं, ठीक है, दे नीड टू वर्क हार्ड. आई एम नॉट सेइंग कि गो एंड गेट फेल्ड, बट इवन इफ दे आर ट्राइंग हार्ड एंड दे आर नॉट एबल टू score, it's a responsibility to make them feel comfortable and find what are the right avenues for them. They are too young. So let's not... It's like जैसे हम लोग ना बोलते हैं कि जाति प्रथा बहुत ही बुरी बात है, लेकिन लड़की चाहिए कायस्थ और उसका रंग गोरा होना चाहिए, वो सरकारी नौकरी वाली चाहिए. तो जस्ट इडियट, वो 3 इडियट्स देख के हम आते हैं तो मतलब नहीं प्रेशर डालेंगे, पर जैसे 10वें एग्जाम आते हैं हम शुरू हो जाते हैं. Exactly. यही आपने जो बिल्कुल बात कही कि हम सारी बातें तो बाहर करते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, हम पैनल्स में जाते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट जब हम अपने घर पे खुद आते हैं तो सारी चीज़ें बदल चुकी होती हैं. आप जाएंगे बाहर, कहेंगे कि कास्ट सिस्टम में नहीं चाहिए, और फिर जैसे ही कोई आता है आप कहते हैं नहीं 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 यार, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए नहीं चाहिए. देन यू ड्रॉ अ लाइन, वेरी like draw a thin line. So I think it's very important what we preach and what we practice. There need to be some similarity in that. So आप ये भी कह रहे हैं कि once you reach a college life, once you are a graduate, in it can be any graduate, and you really work hard after the age of 18 or 20, it's a level playing field for everybody. देखिए बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है हमारा, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर लिया बहुत, लेकिन मुझे लगता है कि वॉट एवर आई हैव डन इट्स बिकॉज ऑफ अ हार्ड वर्क एंड ग्रेट. जब हमने शुरू में एनसीआर एडुसर्विसेज खोला था तो आप समझिए एक छोटी सी दुकान थी जिसका किराया 5,000 रुपये था, और मेरे पास एम्प्लॉय को देने के भी पैसे नहीं थे. तो मैंने एक शीशे वाली दुकान ली थी ताकि मैं उसको लॉक कर जाऊँ, किसी को यह ना लगे कि दुकान बंद है अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहीं गया हूँ. तो पड़ोस वाली दुकान को बोल के जाता था कि जैसे ही आए तो बोल देना कि सर अभी कहीं गए हैं, आ ही रहे हैं, और मुझे कॉल कर देना तो मैं आ जाऊँगा. तो आप समझिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ लाइक यू ऑलवेज हैव टू लुक अप. सो एंड आप समझिए कि हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है. अगर आप किसी भी बिजनेस में कोई शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, यू माइट गेट सक्सेस, यू माइट गेट अ शॉर्टकट, you might use a shortcut to get a like instant success, but you will not be able to sustain that success. So it's a very important. आप समझिए कि आज हम 10 साल में जहाँ पर पहुँचे हैं, आज हमारे पास करीब 350 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है. तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने एक एक दिन करके, एक एक, जिसे कहते हैं ना कि आप एक एक दिन का करके घरौंदा बनाते हैं. सो हमने वो 12-12, 14-14 घंटे दिए इस चीज़ को बनाने के लिए. पहले एक आदमी था, फिर कैसे करके पहला एम्प्लॉई अफोर्ड किया, पहले एक छोटी सी दुकान में ऑफिस था, फिर हम एक इंदिरापुरम में, शिप्रासन सिटी में, फिर उसके बाद हम दूसरी जगह गए, वहाँ पर एक दूसरी बड़ी दुकान ली. सो इट्स अ जर्नी ऑफ 10 years. दिस इज 11th year of ours in a business, and but the only thing that worked for us, the people around, I've got a lovely team. आप समझिए कि जो लोग मेरे पास हैं, those who directly work with me, they are awesome people. I can just bank on them. God has been very kind, but कहीं पर भी सारी चीज़ें हैं, आप हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं कर सकते. आज भी इतने सारे लोग हैं, आई स्टार्ट माई वर्क अर्ली एंड आई वर्क टिल लेट नाइट, बिकॉज मुझे लगता है देयर माइट बी प्रॉब्लम्स एंड देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज बिजनेस इज विल नेवर बी गोना बी स्ट्रेट लाइन, ऊपर नीचे चलता रहेगा. बट जब नीचे जाए, सो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स एंड यू विल सेल थ्रू. सो दैट्स वॉट माई आइडिया इज़ कि आप हार्ड वर्क करोगे, यू कैन अचीव इट. Consistency, grit and hard work will give you success for sure. और ऊपर से ये भी है कि जब आप शुरू में 14-15 घंटे काम करके बिजनेस में खुद ही लगे रहते हो, तो क्या होता है कि जहाँ तक मुझे फीलिंग है कि जब आप बुरे टाइम में आते हैं, देन यू डोंट नेवर फेल बिकॉज यू द हैबिट ऑफ यू वर्किंग रियली हार्ड. किया है वो, आपने किया है, मतलब आपके लिए कुछ नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी एडटेक में there's a lot of turbulence. So I know there's a turbulence, but I know I can beat it. And the team is working so hard, and we will beat it. So that's perfectly fine, because आप वो कर किया, you have not got anything in a legacy. You created it, and you know you can create it again.
you can rewrite a story. What about your father? Please take coffee, sir. What about your father? So my father used to work in an FCI, and he was posted in like a FCI for the is it like a food corporation of India, आर्थिक खाद्य निगम. तो वहाँ पर जॉब करते थे, कमिंग फ्रॉम लाइक ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली. और हमने वो जीवन में सारी चीज़ें आती देखी है. पहला स्कूटर, पहला कूलर, पहला फ्रिज, पहली ब्लैक एंड वाइट टीवी, पहला टेलीफोन, पहली कलर टीवी. That excitement, you know. हाँ, that excitement. एक छोटी सी कहानी बता. तो मेरा भतीजा है, तो क्या हुआ, किसी ने फ्रिज खरीदा, तो वो लेडी स्वीट्स बांट रही थी, ठीक है. तो उसने वो स्वीट हाथ में उठाया, बोलते फ्रिज खरीदने में कौन सी खुशी होती है, राइट ऑन फ्रंट ऑफ द लेडी. एंड आई वाज लाइक, यू इडियट, यू डोंट नो, तुझे क्या पता, हमें पता है फ्रिज में कौन सी खुशी होती है. नहीं बिल्कुल. तो मैं वही कहा कि हमने वो सारी जर्नी होते हुए देखी है, और वी हैव सीन दोज फेजेस. हमने वो समय भी देखा है कि व्हेन वी वर शॉर्ट ऑफ मनी, व्हेन वी वर शॉर्ट इन हैंड. सो ठीक है, बट दैट इज अ जर्नी. बिकॉज जब हम उस तरफ देखते हैं, सो लेट्स से यू गेट सम प्रॉब्लम इन अ बिजनेस, यू स्टक अप समवेयर, यू ऑलवेज लुक एट वेयर यू कमिंग फ्रॉम. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि no matter how like high you fly, but you always have a foot on ground. So that is very very important, and trust me, that ease you out a lot. That ease you out, and you can handle any situations. आपको पता है कि आपने वो दिन देखे हैं, तो आप कोई भी दिन देखोगे, no matter what, you are always at the level up. So you can manage the situation. For me, it was like breakfast was a luxury for me. मतलब हमारे घर में दो खाना बनता था, दोपहर खाना और रात का खाना. दोपहर में दाल चावल. My father was a security guard, you know, so we had a different. मेरी कहानी बहुत ही अलग है, पर मैंने ये भी देखा है कि गरीबी की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं. सर ठीक है ना, जैसे मैं मुझे याद है, I joined Converges. So this guy stand up and he said, we just only had one flat, we only had one servant, and we just had one car. It was such bad days for us. And I was like, फिर मैं वो बोल ही नहीं रहा भाई, तू गरीब था और तू इस बात पे इमोशनल हो रहा है. फिर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, I'm quiet. आपके डैड ने प्रेशर डाला आपके ऊपर पढ़ने, मतलब कि 10वीं में इतने स्कोर चाहिए, इस तरह से कोई प्रेशर? आई थिंक नहीं. एंड आई बीन सो ब्लेस्ड. सो माय पेरेंट्स ऑलवेज फेवर्ड कि मुझे क्या करना है. मतलब दे नेवर पुश्ड मी फॉर एनीथिंग. बस मतलब वो कभी कभार है जो नॉर्मल पेरेंट्स की, नहीं अच्छे से पढ़ो एंड यू नीड टू गेट अ जॉब. बट लाइफ में मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल लाइक आई डिड माई BCA फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो मेरा डिसीजन था. फिर मैंने MCA यहाँ पर किया लाइक IP यूनिवर्सिटी से, CDAC नोएडा से. सो दैट वाज माय डिसीजन. एंड दे नेवर लाइक सेड कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है. दे नेवर पुश्ड देयर थॉट्स और देयर डिसीजन ऑन मी, एंड दे ऑलवेज रिलाइड ऑन मी. एंड आई ऑलवेज एंश्योर्ड कि आई एम एबल टू गिव व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी. सो आई ऑलवेज वांटेड टू मेक देम फील गुड, and somehow at least I feel that they feel good about the current situation. So my idea is like कि 350 team members तक यहाँ पहुँचे हैं. Now I need to find something where like we need to reach 1,000 people company in next 18 months. And we are putting our best foot forward. We are working day and night. And we need to make sure that we achieve. And we have discussed some offline ideas. Believe me, you'll reach there. So it's a very important, because otherwise क्या होगा कि अगर आप नहीं करते हो ना, तो you will lose that consistency. And trust me, as I said, like God has been very kind. आपने 10 साल में ना, we like got every year better than the previous year. Thank God. Yes. What happened when the COVID hit you guys? Or maybe it was a blessing for you, I guess. So I'll tell you, that's a very interesting story. Please. So before COVID, I was in London and I came back, and I was overhearing this COVID thing in China, and like I was getting. Which month did you come back from? I think it was the month of February. Okay, I came from US in the month of March. And before that, I was in China. Achha. So you are the guy who in India. So I came back and I thought, okay, so this is COVID, and I think like there's always news about a lot of pandemics, and I think this will also go. But what happened on 22nd March, so it was my birthday, and then Modi ji declared it's gonna be a shutdown on 22nd. And we were like, we got no from a lot of our clients and said like there's literally no business left. And all of a sudden from April, May, June, we literally had nothing to do. Wow.
So we were like, it's all blocked because people's priority were to save life, and education was not that important at that point of a time because everybody was trying to survive. Padho na padho, nobody cares at that point of a time. And so I got involved in a lot of social activities. So like there was an initiative of Noida Authority. So हम कुछ लोगों ने मिलके हमने डेली करीब 500 लोगों का खाना भिजवाया नोएडा अथॉरिटी में. ये करीब 1.5 महीने तक हमने लगातार किया थैंक्स टू नोएडा अथॉरिटी. और जो भी हम कर सकते थे हमने किया, और टीम मेंबर्स को भी बोला कि अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए हो. सो बिजनेस वाइज it was a completely down. I requested my team ki we are not able to make money and then can we manage it. So if everybody can take a 20% of a salary deduction, I will take 30% on my salary. I took 30% and then everybody else took 20%. Then gradually we got some of the project, like there was some Chinese company who reached out to us. There were some more companies. All of a sudden we got work. And then the COVID case started settling down a bit, and then people were coming back to an online education. So the business got boomed like that. Yes. So we have done better than any of the previous year during the COVID. When we closed in March, so all the money that we deducted, we returned back to all our team members. I said, hey, it was a good year. And we gave like a 50% bonus to all the employees who were in those thin time. So it was a good. God has been very kind. Like, so there was an adversity for 3-4 months. I was not able to like finalize what exactly I need to do. But I said like it's a hard work, team's dedication, and with the God's blessings and blessing from people around me. So we could sail through, and then we have scaled the business pretty well. And I am, right now as we speak, I feel inspired. I don't know. I mean, I usually never get inspired, but right as we speak, I feel inspired. Okay. So COVID came and the online business boomed. And now the COVID is almost again subsidizing, right? So what's the plan? Abhi kya plan kar rahe hain aap? So, see, it's very important to be innovative. It's very important to ride what is happening in the market. So, if you will continue to sell the same thing, if you will continue to deliver the same thing for like a number of years, and you will have your innovation things missing from business, you will not survive. So, we have like a pivoted a bit. So, now we are helping our clients with the ChatGPT thing. We are launching new courses for educators, for the principals, and lot of people in ecosystem. We're launching the ChatGPT courses, how to integrate the ChatGPT in the business. So we're trying and working on it. Then we are reaching out to a lot of our clients where like we are doing a lot of tutoring for them. So we are trying to reach out to how do we optimize that? How do we bring more quality into that? So we pivoted a bit, but now with the ChatGPT, so we want to ride. And trust me, that's the reason, because the ChatGPT, we doubled our target. We said, it's coming. You cannot avoid it. Right. So let's ride on it. So that's what the plan is now. Okay, very interesting question I have for you. The people who work with China and do a wonderful job in their businesses, ultimately it helps economy. Why do we have that little bit of feeling कि देश से गद्दारी type का हो रहा है? What do you think about that? हम तो पैसे ला रहे थे चाइना से. But फिर भी, there are a lot of people who feel as if if you're working with China, that means you are kind of, not enough patriot, because ideally they want everything shut down. No, so I think like when there was this thing happened, the India-China, like so we also stopped the China business. Okay. So we were working with like a 3 of the major like Chinese. On the government pressure, or you decided? No, government was never not putting any pressure. But we decided not to go with that relationship because we thought it's not a good idea, and so we stopped it because somehow we got the same set of business from other countries, and we realized it's better to pause that relationship for some time. And we did that, and we never went back to Chinese like a business partners. And so we focus more on other countries. Amit sir is the guy who is always, most of the time, he's not in India. He's in America or Europe.
please let us know about your journeys to these Western worlds. And have you ever faced a discrimination? 2 questions. Not really. Oh. I think in a current scenario, but sometimes I feel, means like, to be very honest, I haven't faced as such very directly. Yes. But indirectly, I have seen like sometimes like people do want to avoid. But thanks to the current government, trust me, I don't want to be political here. Yeah, so I don't want to be political here. But in the last 10 years, India's image changed drastically. And you could feel it. I could feel it. Trust me, I meet a lot of founders all over the world. Now, everybody want to have an India strategy. So they reach out to me, hey, I've got the lovely product and we want to sell this in India. We want to set up a company in India. We want to come to India. So India is not the third world country now. We have Recent discussions. Yeah. Yeah. We have made a good progress. And trust me, I feel very, very proud when I go and I talk about, and when I see people have their India strategy. They want to come to India. Either they want to sell in India or they want people from India. So you cannot do business right now without India. I was also listening to some of the international strategists saying कि India के बिना कुछ नहीं हो सकता इस time पे. They were just talking to each other and they were like, India is very important in everything. Did you hear that story when Priyanka Chopra, our Priyanka Chopra, was flying in British Airways and she came out of the washroom of the first class and the lady went to her, the hostess, and said, ma'am, this washroom is not for you. You should go back to economy. She said that, ma'am, you should go to the economy. Priyanka Chopra narrated this story. This is how I was discriminated. And she was saying I was wearing a bloody Versace or some shit. Yeah. But this lady, despite of that, came to me and said, ma'am, this washroom is not for you. It's at the back. And this was in a which year? Recently, when she went to US after that. I think 2017 or something. When she went, and that to Priyanka Chopra. With me, it has happened once that I was standing in the business class queue and it was a black lady, African-American lady, who looks at me and says, sir, your queue is there. I think you're mistaken. And I was like, why would you think like that? Because I'm an Indian. I'm supposed to fly economy. And in America, I have been discriminated twice. Believe me, both the times it was African-Americans who discriminated against me. Thrice maybe. The third time is very interesting. This lady comes to me and I went to see my client and my client told, it was like a village where he lives. My client told everybody that Indian is coming, right? My friend Indian is coming. So I was like that monkey, Madari wala. So they came to see me. So this lady comes and says, can he speak English? And I'm like, ma'am, I am not deaf and dumb, am I? She's like, oh damn, you speak English. How are you doing? So, so this has been happening. That's what I was asking. Have you ever been into... It's like, I have not faced any such discrimination. I'll be very honest, like people were very kind to receive me and I've spent good time. So I have like a friends globally and then we spend good time whenever I travel, be it Singapore, be it like a London. Yeah, your travels are always very diversified. You go east as well as west. It's not always west. So I go primarily for the community. So my trips are most of the time for the conferences and then meeting people. So most of the time I do not travel for the business. It's for the conferences. Either I'm traveling to the conference, I'm speaking in the conference, or I'm just meeting with the community. So that's the whole idea. So I go to the prominent education conferences like in Singapore, in London, in US. मेरे को भी ले चलो अगली बार. So, कभी discrimination ऐसा face नहीं किया. I think I've heard a lot and I've seen a couple of instances, but मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. और मैंने तो ये भी पाया है कि कुछ कई बार क्या होता है अनएक्सपेक्टेडली जो गोरे होते हैं, जैसे एक मेरे कजिन ब्रदर है, वो कह रहे थे उनका टायर पंचर हो गया था, तो एक गोरा आया, उसने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और उसने उनका टायर बदल के, जबकि अंकल था, ओल्ड था काफ़ी, उसने बदल के दे के उनको बोला चलो लेके चले जाओ. तो ये भी हुआ पॉजिटिव साइड भी बहुत. नहीं, देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव साइड. इनफैक्ट मेरी एक शिकायत है
जो शायद आज मैं पहली बार आपके पॉडकास्ट में बोलूँगा। प्लीज। मेरी शिकायत है मेरे खुद के अपने इंडियंस से। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे बाहर के लोग मिलते हैं, एक स्माइल पास करते हुए, एक हैंड वेव करते हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ यू। बट मैं देखता हूँ कि मेरे सामने से जब इंडियंस निकल जाते हैं तो वो एक तरफ देखते भी नहीं है, और मुझे लगता है कि ऐसा क्यों। उनके चेहरे पे अजीब सा वो होता है ना कि एक कि क्या है ये। अब ऐसा लगता है कि शायद दे वांट टू अवॉइड और व्हाट मे बी, बट आई हार्डली सी स्माइल्स। मुझे तो लगता है कि मतलब, एंड आई कीप लुकिंग, बीइंग एन इंडियन, व्हेन आई फाइंड एन इंडियन आई ऑलवेज वांट टू वेव, आई ऑलवेज वांट टू स्माइल, बट बहुत कम होता है कि मुझे वो रिस्पॉन्स मिले। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट मेरी ये शिकायत हमेशा रहती है। मैं जाता हूँ कहीं पर भी, मुझे जो वहाँ के नेटिव्स हैं, दे ग्रीट मी, दे वेव हैंड, दे मीट मी। आउट ऑफ द ब्लू, आप जान पहचान नहीं हो तभी बोलेंगे यू डूइंग, तब भी बोलते रहते हैं वहाँ के जो लोग। मतलब मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो जान पहचान नहीं है। मैं जो जान पहचान है, ऑफ कोर्स, लाइक यू गो हैंग आउट, ड्रिंक एंड डाइन, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको मैं जानता नहीं हूँ। एक सड़क पे आप सड़क क्रॉस कर रहे हो, उधर से आपको एक नेटिव मिल जाता है वगैरह, हे मैम हाउ डूइंग, गुड मॉर्निंग, बट आपके सामने से वो एक इंडियन निकल जाता है, वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है, आपसे वो बात भी नहीं करता है। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पर कुछ लिखूंगा या इस पर कुछ बोलूंगा, बट शायद मुझे लगा कि आज आपकी पॉडकास्ट में जब आपने इतना पूछा तो कम से कम जो एक दिल के अंदर एक वो बात थी तो वो आज निकल के आ गई। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आई वॉज टॉकिंग टू अनदर गाय जो कि इंडियन था, तो हम लोग भोजपुरी में बात कर रहे थे। So, एक और लेडी जो कि इंडियन ही थी, वो भी शायद हमारी तरफ की थी। शी केम इन लाइक, यू गाइस आर डिसरिस्पेक्टिंग इंडिया बाय स्पीकिंग इन योर नेटिव लैंग्वेजेस। तो एंड देन आई वाज सो एंग्री, बट आई नेवर वांटेड हर टू गेट अपसेट। आई वाज लाइक, क्या कह रही है भैया, समझ में नहीं आ रहा। एंड द अदर गाय स्टार्टेड लाफिंग क्रेजी। एक ऐसी चीज जो आपके डैड ने आपको बोली हो और वो अभी तक आपका इंस्पिरेशन का सोर्स बना हुआ है, और मॉम ने, मैं इट्स ओके कि कोई भी बोलो, मॉम या डैड। सो मतलब एक बात है, इट्स नथिंग टू, जिसे कहते हैं, सो मेरी मम्मी को हमेशा था कि भाई बाहर जाके कहीं ये हॉस्टल में रह के बर्बाद ना हो जाए और ड्रिंक और ये ना करने लगे, स्मोक। सो बिकॉज हॉस्टल में थे तो हम तो दारू भी लोगों के लिए लेके आते थे, उनके बैग भी बनाते थे, जो सीनियर्स को चाहिए होता था, पार्टी भी होस्ट करते थे, बट आई नेवर टेस्टेड, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम, कि नहीं मैंने उनको ये वादा किया है तो चाहे जीवन में कुछ हो जाए, मुझे बियर वाइन इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। एंड आई थिंक आई गो एंड आई लाइक हैव अ लॉट ऑफ फन। And I pay for them to drink. Yeah, that's fine. Even I pay for them to drink. I can. Hey, Pankaj, he's our best friend. So वो एक बात थी, but I think like whenever my mom looks at me, she always feels good, and that makes her feel comfortable. And ऐसा कुछ नहीं, आज की डेट में drink and dining is a very normal culture. But एक ये वो चीज़ है जो शायद मैंने अपनी मम्मी के लिए की होगी कि नहीं यार, मुझे ये नहीं कहना से सच गुड, बिकॉज आई प्रॉमिस है। उसमें भी आप स्वार्थी निकले। हाँ, कि मतलब मम्मी के लिए, मम्मी के नाम पे कर रहा हूँ, फायदा मुझे बड़ा आ रहा है। हाँ, नहीं बिल्कुल, you save lot of money। हाँ, एग्जैक्टली। अरे जब कोविड आया था एंड वी सर्वाइव्ड, ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं विद ड्रिंक्स एंड अदर थिंग्स, आई वुड हैव बीन रियली इन ट्रबल, बट बिकॉज आई डिडंट डू एनीथिंग, आई एम लाइक थैंक गॉड बच गए। नहीं, कोविड में एक चीज़ और बहुत अच्छा एक एहसास हुआ कि हमें लगा हमारे तो कुछ खर्चे हैं ही नहीं, व्हाट इज़ द लाइफ वी आर लिविंग। आप समझिए कि आई थिंक क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते नहीं तो पेट्रोल भी नहीं जा रहा है, ठीक है। आई थिंक मेड वॉज ऑल्सो नॉट कमिंग, तो वी वर लाइक जस्ट पेइंग टू द मेड, ठीक है उसको। लेकिन अगर हम अपने खर्चे देखें तो कोई खर्चे ही नहीं था। 40-50 हज़ार रुपये इज़ द ओनली थिंग्स जो शायद पूरे घर के खर्चे के लिए चाहिए। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि भाई आई डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, हम चीज़ों के लिए बहुत कई बार परेशान हो जाते हैं, बट आप देखो कि अगर सर्वाइव करने की बात है, सो एक जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, यू कैन मैनेज थिंग्स इन लाइक 30,000 40,000 रुपीज़, और कई बार हम भाग रहे होते हैं। तो व्हाट आई रियलाइज ड्यूरिंग कोविड की, ठीक है, यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अच्छे से मेहनत करो, मेक एवरीवन फील प्राउड, बट इवन इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट, try to stay calm, try to stay relaxed. I try to practice. So as I said, like, so there are a lot of turbulence up and down, there's always in a business,
but I try to calm as much as I can and say कि ठीक है, this is not the end of the world, we can always start there. स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है आपकी लाइफ में, और उसका बिजनेस में कैसे आप वो करते हैं स्पिरिचुअलिटी को अपने? बहुत ज़्यादा तो आई एम नॉट अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, बट आई एम अ वेरी लाइक अ कम्युनिटी ड्रिवन पीपल पर्सन. एंड क्या होता है कि कई बार लाइक फॉर एग्जांपल लाइक जब मुझे लगता है तो कई बार मैं डेली पूजा तो नहीं कर पाता हूँ, बट 1 मिनट के लिए हाथ जरूर जोड़ लेता हूँ. एंड आई ओनली थिंग दैट आई से इज लाइक आई एम सो थैंकफुल लाइक वॉट एवर यू गेव मी, यू हैव बीन वेरी काइंड. मैं मांगता नहीं हूँ कुछ, और कभी कभार शायद 2 4 5 महीने में कहीं मंदिर चला जाता हूँ, एंड कहीं साई मंदिर चला जाता हूँ तो शायद 10 मिनट नीचे जाके हॉल में बैठ जाता हूँ. ठीक है, कई बार सोचता हूँ कि आपका इस्कॉन ज्वाइन करूँ. कई बार आर्ट ऑफ लिविंग के भी कई बार गया हूँ. सो आई ट्राई टू सी कि I need to be calm, and maybe like spirituality can add value into the life. So, but अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ मेडिटेशन करता हूँ या बहुत ज़्यादा रेगुलर मंदिर जाता हूँ. But one thing that I believe, you need to serve human first before you go to the God and go to the temple. So I'm very much involved in all the social initiatives. जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो खाने का हो, मतलब मुझे जो भी मौका मिलता है, चाहे वो गौशाला हो, तो मुझे अगर कहीं पर भी कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो पहले है, लोग पहले हैं, और उसके बाद वही, मतलब दैट इज द वे टू स्पिरिचुअलिटी. नर सेवा, नारायण सेवा, नर प्लस नारी, सॉरी. ओके, व्हाट इज योर व्यू ऑन टुडेज वोकिज्म? जैसे नर में नारी मैंने जोड़ा ही जोड़ा, पहले क्या अंडरस्टूड था नर में नारी क्या है, वोकिज्म पे क्या विचार है आपके? मुझे लगता है कि शायद आई थिंक अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हमने तो हमेशा जो हमारा इकोसिस्टम रहा है, अगर आप देखिए तो हम सारी देवियों की पूजा करते हैं. और वो के हाँ, our biggest god is, I mean, you can define him as transcendent too if you want. हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल अर्धनारेश्वर अगर हम बात करते हैं, तो आप देखिए ये सारा these words are coming from a western words. ठीक है, हम तो शुरू से ही ऐसे थे, हम तो कहीं घर छोड़ के नहीं जाते हैं, हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं. हमारे जो हिंदू गॉडेस हैं उनकी करते, ठीक है, शायद बीच में कुछ आई थिंक जो कल्चर चेंज हुआ होगा, मे बी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स और मे बी बिकॉज ऑफ द मुगल्स, बिकॉज दैट वाज अ डिफरेंट कल्चर एंड दैट गॉट मिक्स इन इंडियन थिंग. बट अगर आप देखोगे तो शायद हमारे कल्चर में शुरू से ही ऐसा था. एंड आई पर्सनली फील it's very important to give respect to the like a woman, and they are equal in today's era. So my wife is like a vice president in the technology company. अच्छा. So she takes her own decisions and she do whatever she want to do. Not so I'm married for the last 11 years and not even once I interfere कि भाई ठीक है, आपको अगर रात के 10 बजे बिजनेस की कॉल की ज़रूरत है, you do that. आपको सुबह 5 बजे कुछ एक्टिविटीज़ ऑफिस की करनी, यू डू दैट. सो आई थिंक शी I'll put it other way around, like, and she has been, although like they always have a lot of pressure. आप चाहे कुछ भी कह लो कि, लेकिन they have to manage kids at home, they have to manage their jobs, और कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की. शायद हमारे जैसे लोग तो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक आई हार्डली लुक एट कि भाई कौन आ रहा है, किसके लिए क्या मेन्यू होगा, क्या खाना होगा. शी इज़ द वन हू प्लान्स, she need to manage everything. तो मुझे हमारे पेरेंट्स से मुझे अंदर we don't care much about it. Exactly. So same as with me. I think मैं तो बहुत कमी उस पर देख पाता हूँ, बहुत ही वो कर पाता हूँ. But Sonia manages everything. Like she manages the relationship, she manages the relations, she manages things at home. I try to support as much as I can, but I think That means I don't do everything. Yeah. So rather like she's a great support for me. Like and I believe like whatever I could achieve in life, a lot of credit goes to her. What is your message for the young people, okay, who are doing their graduation? What would you like to advise them? How should they approach their life? I think it's very important to be honest in approach and do what you love and love what you do. मतलब जो भी आप काम करो मज़ा आना चाहिए. And I see lot of guys getting into the startup and they are doing a startup just because there is a startup hype.
मैं उनसे वही कहता हूँ कि आपका जो दिल करे, like if you really want to build a startup and that is coming from inside, build it. But don't build it just because somebody else is building it. So I think it's a waste. don't go with the craze, but do what you love. And this is a time for you to learn. This is a time for you to experiment. This is a time for you when you can do a number of things. एक बार आप हमारी एज में आ जाओगे 40 because आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं. So you are too young. Do as much experiment as you can. Try something that you love and then go with it. And even if you fail, that's fine. That's perfectly fine. आप fail होते हो, I think. So before this I started a software company. I failed badly. I failed badly. So I failed badly and I realized कि अब तो यार कुछ भी करूँगा, सॉफ्टवेयर नहीं करूँगा. हाँ. So I think it's very important, and trust me, Sushil, that gave me a great learning. So पहला तो कुछ पता नहीं था, तो जब हमने स्टार्ट किया तो वो झूमर भी लगवा लिया, AC भी लगवा लिया, बढ़िया बॉस चेयर, बॉस टेबल. But when I started this second business, तो मुझे पता चला कि नहीं यार, these are not relevant. And when I started this NCR Eduservices, I only spent, I think, 15,000-20,000 rupees. I bought a pair of curtain to divide my bedroom into two parts so I can have a small office. I bought a second-hand furniture and I bought a second-hand phone just to start this business. Because मुझे पता था I do not want to create these recurring liability. So I think एक young gen के लिए ये बहुत important है कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, and do not go with a rat race. And even if you try something hard, you fail it, that's fine. That's not the end of the world. Try again and keep trying till you get the success. Have that grit, have that passion, and you will be able to do wonders. Yeah, and sad part about the rat race is even if you win, you're still a rat. Exactly. You said it. अच्छा. और कुछ लोग जब सबसे ज़्यादा frustration interview में होती है आपको. When you take the interview, somebody comes. Do you take interviews? Yeah, you do. I do. So don't you get frustrated when somebody comes to you and says, I want my own, want to be an entrepreneur. What would you like to do? I want to do this. And then you say, tell me this section of that business, or he doesn't even know anything about it. I think that's fine. So these are too young. So I'm talking about the freshers. So they're young kids and that's perfectly fine. Everybody. So I hear this a lot. I want to build my business, and I say that's fine. I think that's good. So, but at this point of time, before you get into the business, I think it would be good if you just learn how to build a business. And I could build this business because I worked for a nuclear software for like around 8 years. Yeah. So my brother was there. Okay. In Mumbai. Okay, so I worked there in the Noida office, and I spent around like 2 years in Tokyo as well. Nucleus सबको मौका देता है. I think I've learned everything from Nucleus. And Nucleus मतलब मौका जरूर देता है. अगर आप फ्रेशर हो तो आप Nucleus चले जाओ, आपको मौका दे दे. You will learn a lot. आप समझिए कि विष्णु दुसाद was the CEO जब मैंने join किया, and I learned. So he was my role model. He was very modest, and जो भी मैंने NCR Eduservices में implement किया है, I learned everything from a Nucleus. So I worked in just one company, and that was Nucleus. उसके बाद ये अपना शुरू किया. But I learned a lot. And I've never seen a person so modest like Vishnu Dusad. So he has been working with a lot of schools and colleges, which is in Europe, in America, in Singapore, and almost all part of the world. Okay, and especially into the tech, and such a great conversation, which I believe. I thoroughly enjoyed it, and I said, like, I talked about the Indians in the different countries. So this was something that was a deep insight. Wanted to share. अगली बार मिलना ना तमीज से हेलो कर लेना भाई से. I think that would be really good. I'll feel happy that actually I could communicate. आप नहीं करोगे तो हम कर लेंगे. I also do this. Whenever I go to US and I see somebody, especially in Indian, जानबूझ के छेड़ता हूँ मैं. How you doing? I'm talking to you. How you doing? I'm good. Maybe confidence का issue. नहीं. I think not exactly, but I think they must be thinking something, but that's okay. Yeah. Thank you very much that you came. Thank you so much for inviting. It was such a candid and a lovely conversation. Thank you so much. Please like, subscribe, and press the bell icon. Aap bhi boli.
Please like, subscribe, and press the bell icon. I'm looking for a more podcast on the same channel. Thank you so much. Have a lovely day. Within 3 months I'll have him again, okay? Because he has many things to go. और आजकल बहुत जल्दी नहीं हो रहा है. अगली बार हम 2-3 घंटे के लिए बात करेंगे.